thank you everyone for joining us for the first edition of Right Circle for 2023, and let's hope this is a fantastic year for each one of you. And we were thinking what to do for January, and Sadaf's book is one of my favorite books. I cook a lot from his recipes, so I said, listen, we need to start with food, let's start with celebration, it'll just be such a warm, fuzzy feeling, welcoming, we start the new year on a right note. So Sadaf, a very warm welcome to you. Thank you so much for joining us. Thank you so much. The Right Circle is presented by Sri Cements in association with Prabhaketan Foundation, Spagia and Asas, and of course Siahi. But I think the association is more with the city of Jaipur, with each one of you. So you are the ones that make this happen month after month. Thank you for being here. Before I get into the conversation with Sadaf, I'm going to request all of you to please turn your phones on silent. Sadaf, apart from being one of the top contenders for MasterChef India 2016, he also works as a food consultant, and that is a very wide definition, so we will get into that later. He's also an animator by training, which is again very fascinating. I also have understood that by nature and instinct, he is a very intense researcher, which shows up in his writing. And he's also a very avid storyteller, which is a great combination. So I'm going to get straight into letting you discover the magic that Sadaf can weave, not just through his food, but through his storytelling skills as well. Sadaf, Yes. how does it feel to be in Jaipur? Quite warm. It is weather. Well, literally warm as well because it's super freezing in Delhi, and when I get back home, it's normal. This is how humans feel like. So today, and in general, I think this is. I don't know. I always have this. What you mentioned earlier, right? The warm, fuzzy feeling. So every time I come, the last I was here was 2019. If you remove COVID era, then kal ki baat hai. I was here, and then I always find, I don't know why, but I always find it very warm in Jaipur. And every time when I'm in Jaipur, I sort of see a different side of Jaipur. The last time I was here, I don't know what all places I was exploring, people met, and then I was at their Havelis, and I don't know what all. And this time it's... You have to come back. Let us make you walk the streets of Yes. Jaipur. You see just another Jaipur there. Please, that would be awesome. I've been living here all my life, and I don't get tired of turning into a street or a corner. Right. You're still discovering magic somewhere or the other. And I like huge bungalows, that koti, right? And that's why I was just randomly on the streets, and I'm like, oh, look at that beautiful koti. I'm like, oh, that's because every time when I go to a old city, 2-3 weeks back I was in Agra, and I was saying mesmerized. The guy who was taking me around, he's like, why is it such a fascinating thing for you? I'm like, because when you come to Delhi, you don't see such things, and I like such old texture in the city, and these are the older monuments which makes me feel good. So, so then you should live in Agra because every gully has a texture here. So like that is true, but not. I'm okay in Delhi too. I think we just have to keep calling you back. Yes. So Sadaf, food is such a binding agent. It's an equalizer. It gets people together. It gets conversations started. No matter who you are, where are you from? I want your comments. Yes. Yes, it is. I think food in general, because we all, whatever theory you apply in your life, live to eat or eat to live, but you're eating. That eating is constant. And I think we all have memories attached with food. A curry chawal, as simple as that. I don't think your mother makes it the best. Everybody says that. And if you are the mother, then you would make the best. Yeah, I can never do it. I mean, I can never put up a curry chawal in a restaurant because
you don't want to fight with mothers, basically. Mummies nahi ladna hai. So there's that sense of comfort when you talk about food, and you know something about the food, an ingredient itself. Like I, for example, I love pani puri, and any city I go to, the first thing I do is actually I love pani puri and kebab both. I couldn't find kebab here today, but I ate pani puri because it's such a beautiful. I mean, I love pani puri, and every city has their own version of pani puri. I don't know why people don't talk about all these things. I don't know why people talk about biryani. That oh, every city has their own version of biryani. I think people should also talk about every city has their own version of pani puri. It's simple, and everyone has their own version of pani puri. So I think equalizer, yes, because irrespective of your opinion in general life, but food will bring you together, and also it also is a divider in a way. Why would you say that? Because food is such an identity for you. Like this is my identity. So for many people, this is how we eat and this is how it should be eaten. I remember there was a time, because we talked about another unofficial mentor of mine who sits in Delhi, Atul Sikand, and there was this one time, Saranch Goela, the Butter chicken guy. Goela butter chicken guy, the butter chicken guy. Is he actually that good? His version is good. Overrated. It's overrated, but it's good. I mean, he's a friend of mine, I can't say overrated. I just caught you off guard. It's good. Bombay style. This is Bombay style. Anyway, so he was in MasterChef Australia a couple of years back, and he made butter chicken with Rumali roti. Right? Now, it's a blasphemy apparently to eat butter chicken with Rumali roti, because you eat butter chicken only with tandoori roti or khamiri, whatever you call it. And I'm like, but why? So people started trolling him for that. A couple of days back, I made something called aloo posto, which is a Bengali dish. Now, I did make it. I loved it. All good. Now, the only thing that I did was I ate aloo posto in the morning with luchi, the puriya. See? If you are the real Bengali, you are not going to have, you are having with the rice in the afternoon. And also you don't boil your potato, I did that. Yes, you fry. You don't fry, you just cook it. I did all the wrong things possible. I loved it. So I'm like, somebody texted, not somebody texted just on Instagram, but also WhatsApp saying, oh no, you don't. I'm like, kisne bola? Why can't we have it? And that's what I'm saying, it's such a divider as well. It's your identity. For Bengali it is, I never, again, Mammiya and Bengali, never fight. I think we should add Punjabis to that. No, Punjabis are okay. Punjabis, Delhi walas are okay, eat whatever you want. Bengali ka nahi. Okay, so when you're Luchi, you cannot experiment. See? Exactly. When you're walking the streets, like you just mentioned, that you love walking the streets to just understand the texture and the grain of every city, people keep looking for definitions of what is culture. Would you say that understanding the food of a particular city or a region means you've understood the culture of that place? Would you identify largely with a belief like that? No. Okay. शहर की ज़बान, तहज़ीब और खाना हमेशा चेंज होता है. You can't keep it constant. And I'll tell you exactly what I was thinking. I was on the streets near Birla Mandir, and there's like just thelas and thelas of pav bhaji. Is pav bhaji Jaipuri, Rajasthani? No. But is that pani puri? Sorry, not pani. Pav bhaji Rajasthani, Jaipuri? Yes, technically. Adapted to Rajasthan. Correct. So it keeps on changing. Otherwise, you get stuck in this stereotype that oh, Lucknow matlab kebab hota hai or Rajasthan matlab lal masi hota hai. So I like the idea that it's ever evolving. I like the fact that people went to Bombay or saw it or called globalization, whatever definition or the stamp that you want to put. I think it's such a beautiful thing that it keeps on evolving. And that's why there was this discussion I had with one of the chefs. He sits in US, white guy, Gola guy, but loves Indian food.
And we were talking about it, whose food is this anyway? Can you call this as your food? Yes, maybe when it originated. Good old debate is tea Indian? Yes, of course it is Indian. It is as China. Huh? Well, yes, there are different discussions on China as well. But yes, tea is very Indian. That's why I don't think people should, in that time and space, yes, you can understand the culture or how the mood of the pulse of the city. But 10 years now, you know, Delhi was popular for chaat and suddenly it became popular for momos. No, that's blasphemous. What about the noodles and samosa? And then that, and then there was. I think it's still famous for chola bhatura. It's still famous for. So, and the parathas. The parathas, sure. The parathas, there's chola bhatura, there's momos, there's Maggi, ice cream, and all that as well happening. Yeah. But yeah, so it's in that time, that's the city's pulse. Okay, let me take you back to your childhood, because food, and you've already mentioned it, that childhood and food are absolutely inherently connected. Some of your childhood memories which makes you go closest to the kind of food you grew up with, and that also shaped your career in this area. Tell us about that. So I grew up in this town called Ranchi. For people who have been to Jharkhand, I will tell them I grew up in this city called Ramgarh, which is, I think now it is 1 hour from Ranchi, but Ranchi is popular, so I'd say Ranchi. My house was bang on the street, like the NH, National Highway, and then this house. So I think what shaped my food for sure, because my house was on the streets, well, almost on the streets, I would eat all the street food. So that's there. Second, bunch of things. Before the Zomatoization, the closest good food place was 6-7 kilometers. Otherwise, there were dhabas. But dhabas may also, because my family, well, yes, I would say my family were not drinking. जो बोलते कब शराब ही नहीं थे. So dhabas are notorious for alcohol, so they won't go. And my mother specifically won't go. Even if she'll see like a Kingfisher bottle, because that's the most selling beer of that time, like now Bira, but Kingfisher. So she won't even walk into a dhaba. So, and then I think mother has this thing. All the mothers have this thing. The same thing you would eat at a restaurant, like, तो मैं बना लूँगी. 350 रुपए क्यों दे रहे बर्गर के लिए, घर पे बना दूँगा, मकेन्स की टिक्की लगा दो उसके अंदर तुम. 350 क्यों दे रहे? या फिर बर्गर के अंदर जो पैटी आती है तो वो तो शामी कबाब बना कर डाल देंगे, उसमें क्या है? So my mother would always say that, and my mother loved cooking. She थोड़ा जल्दीबाजी में खाना बनाती थी, लेकिन हाँ, she loved cooking. So that's how I learned that okay, everything should be and must be eaten at home. What shaped my food journey was very interesting. I will share with all of you that when you grow up, when you're growing up, while this thing is happening to you, people have this really fantastic ideas to what they want to be in future. The most common thing is I want to be an engineer, I want to be a doctor. If you're a tall girl that you want, then you want to be in the cabin. Men want to be the pilots, etc., etc. I had no such hopes. I had no such thing. I just wanted to be the fattest kid on earth. And I'm not even kidding. I just wanted to be the fattest kid. I am now 85. I was 86 when I was 13. So my weight has been the same. So you could imagine like almost like a round ball. Because I love food so much. And I realized that when you love food so much, you start understanding कि जा क्या है इसके अंदर, जो मेरे अंदर जा रहा है. My nanny, I remember my nanny used to narrate this that when you are young, 6-7 महीने जब आपकी मसाज होता रहता है. So one fine day I wasn't crying. Otherwise I will cry every day. And then she was doing the back massage, and suddenly she flipped me, only to realize that why I was not crying, because I was eating chocolate. 7-month-old baby. Yes.
without, I mean, धूप में ना तो मुंह में पिघलने वाला. So I was eating chocolate. So that, I think all that in a way shaped my food interest. That okay, you know what, food is such a fantastic thing. It is equalizer at the end of the day. It brings people on the same table. We had one table and people, all of us will come together and eat. Before the Zomatoization happened, all of us would cook for each other. I also grew up in a very interesting kind of a society where I had this one Hanuman Chalisa which I still remember because I grew up hearing Hanuman Chalisa every morning 4 o'clock. My neighbors were one guy from Kerala, the other one was from Staunch Bihar, then there was Marwadis and all, so everybody around. So I think all that in a way shaped my food identity. So I don't have one food identity that what kind of food did you eat at going. I ate almost everything from a chane ka and chane aloo ka char, which is a Marwadi speciality, to idli sambar, to litti chokha, to of course not biryani, pulao and kanya. Because biryani is a recent post-tomato that happened. Poor people never ate biryani. Poor people ate pulao. So that was all that made me take a lot more interest in food eating and making. Right. So, how did you land up being a part of the whole MasterChef shebang? So one thing I mentioned, and we also discussed this, that I haven't learned much of the things from my mother. Why? Because I'm like, जो आपको पता है वो मैं क्यों सीखूं? Because आप तो हो ना. So my mother used to make the best biryani possible, and she made the worst kheer ever. But I still loved it. And kheer was literally दूध चावल. दूध boil, चावल डाला, boil हो गया, खत्म. But one thing that I learned from her was cake. How to bake cake. As I said, the nearest was 6-7 kilometers. And the cart guy used to come and will get for like a 2 rupees, 2.5 rupees. This really pineapple cake, which was the hot cake during birthdays for many people. Now we order from Quaint Cafe and Miam if you're in Delhi. Another place. But that was little pack of wonders. So all that happened, and that's when I started taking interest, and my mother and I would bake cake 5 times in 1 year. 4 because 4 of us, me, brother, father and mother, their birthdays, so 4. And 5th was, 5th, no, not anniversary. Who celebrates anniversary? We were not, इतने posh नहीं थे. क्या anniversary कौन मनाता है? No, the 5th one was हमारे school में teacher day. So there's a teacher's day in the school, and one day I'm like, yeah, why are you spending so much, which is 100 rupees on a cake? मतलब हम चंदा करके ऐसे करके teachers को खिलाया. So and I'm like, my mother makes the best cake, and I till date, I think that's in a way has stuck to my head, which is a tea cake. And I absolutely love tea cake more than that creamy thing. So my mother and I would make cake. 30 rupees ka cake, 50 rupees ka I'll sell, 20 rupees net profit. My mother will take whatever she will do with that. But I just enjoyed the whole process of licking these maida when it comes on your hand. Before the whisk and all, she would whip it with her hands, and she would know when it is aerated because then the bubbles will start coming in. So all that science which she learned from her mother or by reading Pakiza and Mehta Anchal. She didn't read Femina, by the way, just saying. So Pakiza and Mehta Anchal were the popular Urdu magazines back in days. Or Grishoba. So yeah, that's how. But and I was always interested in food. I moved to Delhi in 2011. I was working, and I would always cook over the weekends. Because weekday pay I'm working, weekend pay I'm cooking for home. I would always take the food to the office. One fine day, my friend at my office said, "Hey, listen, MasterChef is happening," and I thought band ho gaya. Because मैंने देखा ना बंद हो गया होगा. So like बंद हो गया. Like no, it's happening. So I said, okay, I still remember it was Ramzan ka mahina tha, and she said go. I'm like, so I like to do this, that take a chance, no, that what is the max that can happen. अगर
बनी, बात बन गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनी तो पहले कौन सा था? मतलब if you go on the show, wonderful, अगर नहीं गया तो नहीं गया, पहले कौन सा शो पे थे? So the max will be एक दिन की छुट्टी चली जाएगी, कोई बात नहीं, बहुत छुट्टी पड़ी जिंदगी में. So that's when I made the food. And उससे पहले the confidence I earned because I was running this Delhi's first, I would say, pop-up cafe in 2015 and 2016 called Bread and Better with another friend of mine, and both of us were in economics. तो हम economics public policy की बड़ी बातें करते थे और फिर थक जाते थे महीने के end में होते. So let's and she would bake, I will cook, and this everything would be live. People will come not to our house, it was a moving pop-up, so we'll go to different houses, not again a restaurant. In modern times you go to restaurants, my idea was always to make people feel casual, like stay away from the phone, make new friends and all that. So that gave me confidence, because the moment you get money for what you do, it means तुम कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो. So people were paying me for the food they were eating. And that's when the MasterChef happened, and then the rest is history, as you say. You make it sound so effortless, but I'm sure a lot of grime and grit went into it. Yes. So that brings us to your book, which is one of my favorites. And I literally, when we decided to invite you, it was an unsaid thing in the team that Meeta's going to moderate this. There's nobody else she's going to let do. Perfect. Okay, so Dastane-e-Dastar Khan. Guys, this book is unbelievable. It's about your love for food. It's as much about food history, and it also showcases you as a storyteller. How have you managed to straddle all three so beautifully? So, I was in the kitchen, and I realized that people cook food, decent food. Chefs cook more or less good food. Not all of them, but many of them. But what they don't have time to do is to write. So many of the cookbooks that you pick up in the market, they are not necessarily written by the chefs because time nahi hai. So they will have a ghostwriter or something like that. Or even if they have, then it's mostly going to be recipes or when they're retired and all. Right? When I wrote this book, I was quite young, and I was always happy that okay, there was 30 chapters in the book, and you can. Anybody who want to take a wild guess why there are 30 chapters in the book? You were 30 years old? One for each what? One for each day. One for every day. One for each day, okay. Were you 30 years old? 30 years old, okay, and 30 recipes. 30 recipes, one for each day. So the sensible, smart answer is that yes, of course, one for each day. February में आप काले बात है, लेकिन हाँ, one for each day. इसका क्या होगा? नहीं, वो जो February में था ना 2 बजे था. But the real reason is that I was turning 30. Oh, it is real. मैं देखो 30 साल का होगा. So I was the young one of the youngest perhaps, who started getting into writing, and I realized that the chefs know so much about food, and yet they have absolutely no time. And I said, I'm going to take that time out. Everybody can talk about or Google recipes, but what is missing are the stories. And I always tell people that don't pick up my book ever if you want recipes, because that's easily available. But what you want to do is to sort of understand the background stories. And through that, I want you to fall in love with food the way I am in love with food. And I also use very simple language, not very fancy, gimmicky, jargony language, and break it down as much as possible. So yeah, so that's what I did, and I let's come up with the book. It took a lot of research, of course, almost a year to read, reread, write, rewrite. I remember the first chapter I wrote, I'm like, एक पेज का लिखा हो गया. And I'm like 30 लिखना है, 30. And I'm like 30. चलो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, 60 पेज रहेगा. In my mind, I'm like 60 पेज तो ग्रीश ओवर बनती है. ग्रीश ओवर थोड़ी लिखना, 60 पेज का. So then I literally had to throw away all these, discard all these 10 chapters, start again, and then word से word जुड़े. जो love, एक love दूसरा love कहानी जुड़ती गई,
and that was the also time I like stories. I don't think stories, or when you give like a face to complex issues in life, solutions through faces. I think like, for example, we understand songs better because we understand the flow. So I was also training myself how to be better, how to write for people, so that they understand, so that the whole process went through. And I think my first book came out, and I was happily surprised with myself as well. For two reasons. One, because I genuinely, I'm not even kidding, I used to run away from writing. I'm like, यार लिखने पढ़ने का काम मत करो, काम करा दो. Give me work to do, I will do it. Don't give me like thinking job. But then, and I think through this book, I was like, I want to be one of the youngest authors who is interested in food, who is interested in food history. And I started saying that, you know what, food history doesn't have a clear trajectory. It's happening in parallels. So for example, what mentioned that chai China से आई कि चाय असम से आई, दोनों कहानी है, राइट? बिरयानी जो है हिंदुस्तानी है कि बिरयानी भारत में बनी, निहारी जो है लखनऊ में बनी कि निहारी पुरानी दिल्ली में बनी, दोनों जगह बन गई होगी, राइट? बटर चिकन का असली नाम क्या है, बटर चिकन है कि चिकन टिक्का मसाला है, दोनों ही है सकता है. तो वो पैरेलल चलते रहती है. And that's when I say storyteller. Let's talk about the food story, because again, shamelessly, I remember speaking with Ranveer Brar once, and we were just talking, and I always steal his line, is कि romanticism जो है ना, romance. So food romance को बरकरार ये कहानियाँ रखती हैं, तो वो उसको जिंदा रखो. अब जैसे एक बहुत ही पुरानी कहानी लखनऊ की आती है, और जितने लोगों ने कहानी वो अपने हिसाब से कहानी सुनाई है. और लखनऊ की जहाँ तक बात करते हैं तो सारा का सारा खाना का क्रेडिट जाता है वाजिद शाह को. कोई है ही नहीं आसपास, सब वाजिद शाह. तो जैसे अच्छा मुस्लिम मतलब मुगल फूड, तो लखनऊ मतलब वाजिद शाह. तो अब उसमें कहानी अलग अलग लोग अलग बताते हैं कि वाजिद शाह के पास एक बावर्ची गया, या फिर हम जैसे लोग बोलते हैं नवाब साहब. अब नवाब साहब आप डिसाइड कर लो कौन सा वाले नवाब साहब लगाना है. सो नवाब साहब के पास एक कभी नहीं है. हाँ, लखनऊ कभी नहीं है, बहुत ज़्यादा है. कोटा में पत्थर मारो इंजीनियर निकलेगा, लखनऊ में पत्थर मारो नवाब निकलेगा. तो नवाब साहब के पास एक बावर्ची गया, और बावर्ची ने बोला कि खैर नवाब साहब को बोले कि मुझे ऐसा चीज़ खिलाओ जो मैंने कभी खाया नहीं. अच्छा, आप मुझे रोज़ाना का एक सोने की मोहर दीजिए. सोने की मोहर रोज़ाना, ठीक है. फिर क्या हुआ, फिर 30वें दिन पर, आज से 30वें दिन पर आपको मैं ऐसा शानदार खाना खिलाऊंगा कि आप बिल्कुल उंगली चाटते रहेंगे. ओके चलो ठीक है. तो हर सुबह बावर्ची जो है पहुंच जाए, एक सोने की मोहर लेके चले जाए घर. 30वें दिन आए, नवाब साहब बिल्कुल बन ठन के आए, खुशबू लगा के, लगा सुबह नहा लिया दिन में, उन्होंने सर्दी में लगाया, खुशबू किया, बैठे सिंहासन पे अपने, और फिर शेर शायरी शुरू हुई, बिकॉज नवाब है तो शेर शायरियाँ हुई. और देखा वाजिद शाह है तो होंगी होंगी, थोड़ा नाच गाना भी होगा. बावर्ची आ गया, बावर्ची ने बोला चलो. बावर्ची देख खोली और देख मिला दाल. तो नवाब साहब बोले ये क्या बदतमीजी भाई, 30 मोहर समझते हो तुम, 30 सोने की मोहर, मतलब अभी भी महंगी है, तब भी महंगी हुई, थोड़ी सस्ती चीज़ें. तो ये क्या बदतमीजी, दाल क्यों खिला रहे हो, मतलब आउट ऑफ ऑल थिंग्स 30 सोने की महंगी की दाल, इतनी महंगी दाल. तो उन्होंने क्या किया, दाल उठा के फेंक दिया ठूंठ इज द डेड ट्री. और जो बावर्ची था उसको हो गई जेल, और जेल के बाद जोधा को देखिए ना, फेंक दो नीचे, जैसे महामंगा के लड़के को मारा गया था, तो वैसे ऑर्डर हो गया कि उनको फेंक दिया. फिर सडनली जब ठूंठ पे फेंकाया दाल, तो दाल से ठूंठ जिंदा हो गया. ठूंठ इज डेड ट्री जो है वो जिंदा हो गया. तो फिर नवाब साहब सडनली देखा ना, बोले अरे भाई साहब ये तो नाउ आई अंडरस्टैंड. तो अब ये जो कहानी है गब्बासी का कुछ नहीं है. ठीक है, बिल्कुल गब्बासी है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है. जैसे चाइना में चाय का बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि चाय पत्ती जो है साहब, चाय पत्ती उड़ते उड़ते जो है ये चाइनीज जो थे डॉक्टर, उनके पानी में चली गई.
अब पी रहे थे, उनको पीने में बड़ा मजा आया, तो मैंने इसलिए पिया। अब मैं एज अ सूडो फूड हिस्टोरियन और एज अ स्टोरी टेलर कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो भी चाय पीता है सबको पता है कि फ्रेश पत्ती डालने से कुछ नहीं होता। फ्रेश पत्ती आप बॉईल करो चाय की, कुछ फ्लेवर नहीं आने वाला है, मतलब हल्की सी आ जाएगी, लेकिन वो जो सूखने के बाद जो काला रंग जो है ना, वो सूखने के बाद आता है। तो ये कहना कि चाय जो है चाइना से आई और ये वाली कहानी जो है मुझे कबासी लगती है, लेकिन सुनने में बड़ी इंटरेस्ट लगती है। हाँ, एक डॉक्टर साहब खड़े हैं बालकनी में, उनके चाय पानी पी रहे गरम गरम, और अचानक से उड़ते उड़ते कहीं पे पत्ता आ गया। ओह, सो दैट्स द फूड रोमांस एंड आई थिंक आई लाइक टू डू दैट। मुझे वो कहानी के थ्रू फूड रोमांस जिंदा रखने का शौक है। There's enough of it in his book. I can promise you that. So when I'm going to get you to your recipes. When you were writing your book and kind of deciding which recipe is going to go in, because I'm sure there's a plethora of them that you wanted to put in and so many had to be left out. What processes did you do to put those recipes in? Because you obviously have to try each of them out, perfect each measurement. How was that? How was that process? So one thing I was very clear, what I don't want. The idea of writing this book was to try to burst this myth that अच्छा तुम मुस्लिम हो तो गोश्त ही खाते हो, वो क्या ही खाते हो तुम राजस्थान से दाल मसाला क्या खाओगे, तुम साउथ से हो तो डोसा इडली सांभर, and that's exactly what I said. I want to stay away from it. My book doesn't have बिरयानी, गिन के 19 दफा बिरयानी का जिक्र हुआ है, वो एक वर्ड पे, बस खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं, because बहुत सुन रखा है लोगों ने कहानी बिरयानी की, मैंने ही 50,000 तो मैंने ही लोग बता दी बिरयानी पर। सेकंड कबाब, जो रेगुलर कबाब है जो मार्केट में मिल जाएगा आपको, वो तो पहला बहुत सिंपल था। व्हेन आई एम गोइंग बैक इन दिस मेमोरी पैलेस, आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट द रेगुलर फूड जो लोगों को पता है ऑलरेडी। सीख कबाब सबको पता है, बिहारी कबाब नहीं पता है, शामी कबाब सबको पता है, गूलर कबाब किसी को नहीं पता है, राइट? गोश्त सबको पता है, भिंडी, हंसी, मुसलमानों की भिंडी खाते हो, वो भी है, राइट? देन एक है जो मुझे, आई डोंट लाइक टू ईट पान फॉर पर्टिकुलर रीजन, क्योंकि बचपन में पान खा रहा था और पान खाते खाते जो है बिल्कुल सफेद कुत्ते पे गिरा था। गाना तो अच्छा बजा था मेरे, वो पान खाए सही हमारा, लेकिन जब जैसे गाना बजा ये अम्मा गाया सन से बिल्कुल सन्नाटा छा गया, तो गाना बंद हो गया बिकॉज कुर्ता लाल हो गया था। उस दिन के बाद से मुझे पान पसंद नहीं आया, वो क्या आता ही नहीं, तमीज ही नहीं खानी थी, कोई सिखा दे तो बड़े खा लूँ, लेकिन तमीज नहीं खाने का। बट आई लाइक पान एज अ स्टोरी, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जो प्रोसेस वही था कि पहला स्टे अवे फ्रॉम दीज स्टीरियोटाइपिकल डिशेस, सेकंड इज टू फाइंड दीज रियली ब्यूटीफुल स्टोरीज, और जो किस्से कहानी वही जो सुनने में अच्छा लगे, वो फैक्चुअली भी करेक्ट होना चाहिए टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे दीज आर फूड स्टोरीज। अगर आपको पढ़ने मजा आ गया, काम खत्म। एक जब दास्तान को बैठता है ना वैसे धागा चुनी पहन के तो अंगरखा अचकन अंगरखा तो बोलता है, खैर तो अचकन जब पहन के बैठते हैं तो वो कहानी सुनाते हैं, आप उनकी बातों पे उसमें मजे लीजिए। फैक्चुअली राइट है कि नहीं है वो उनका काम है, वो हिस्टोरियन बढ़िया। तो मैंने वही टू अ लार्ज एक्सटेंट, ऑफ कोर्स हिस्ट्री है, तो टू अ लार्ज एक्सटेंट आई हैड टू डू सो मच रिसर्च, गो बैक एंड फोर्थ। एक फॉर एग्जांपल आई रोट दिस वन कोरमा की रेसिपी। नाउ एक रेसिपी मुझे मिली कहीं से, उसमें टमाटर, अच्छा टमाटर खोलने में जाता नहीं है भाई, तो किसी ने बनाया टमाटर जाता नहीं, लेकिन इसके यहाँ टमाटर था। मैं क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि टमाटर नहीं जाता है, टमाटर नो इट डजंट गिव द सेम फ्लेवर लाइक दही, अनलेस यू आर मेकिंग कढ़ाई गोश्त तो टमाटर जाता है, उसमें भी दही डालते हैं। तो आई कॉल्ड अप अनदर पर्सन एंड लाइक लिसन यार इसमें टमाटर दिख रहा है, तो देन लाइक नहीं टमाटर गलत है। तो अक्सर इंटरनेट पे भी जो चीज़ें वो गलत है, किसी बड़े इंसान के नाम पे आगे तो नहीं कि हाँ वो सही होगी। तो ये प्रोसेस बैक एंड फोर्थ करना, ये चीज़ें जो पढ़ने में अच्छी लगी। 2-4 चीज़ें मैंने लिखी, चैप्टर्स लिखे और हटा दिया बिकॉज मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा है। आई वाज टेलिंग समबडी दैट जब तक आप खाना बना रहे हो खुद को ही मज़ा नहीं आया तो फिर क्या फायदा है। तो कहानी वैसी है, ये भी तो आप कुछ बना ही रहे हो,
तो अगर आपको अपने वर्ड्स पे ही मज़ा नहीं आया तो क्या फ़ायदा? Yeah, in fact, you mentioned the story about Pan, which is there in his book. You already mentioned Bihari Kebab because that was going to be my next question in any case. You're just seeing into things, I think. There's also one thing that you missed mentioning is your Nani's Mughlai Paratha. Now, that's a beautiful story. I think you should just kind of make them salivate a little. Talk about it. So, मुगलाई पराठा जो है ऑनलाइन भी बहुत मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे। नानी ने पूरे ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में एक ही बार बनाया था ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब हो रहा था तब। मुगलाई पराठा क्या होता है नहीं होता है इंटरनेट की दुनिया में अलग दिखता है। माय मदर को थोड़ा बहुत याद था कि ऐसा मुगलाई बनाती थी नानी। अच्छा शी सेज कि नहीं कभी बनाया नहीं। नानी बोलती तो तुम लोग ऐसे बड़े हुए जब मैंने कभी खाना बनाया तुम कैसे बड़े हुए? तो मुगलाई पराठा एसेंशियली इज नॉट कि ड्राई फ्रूट डाल दिया शाही हो गया, बट इट इज थिन पेस्ट्री टाइप्स जो कि मैदा का बनता है बिल्कुल। उसके अंदर यू केयरफुली पुट थिंग्स राइट व्हिच इज एग, मीट, ड्राई फ्रूट्स व्हाटएवर यू वांट एंड देन फोल्ड इट। अभी के ज़माने पे जब आपको मिलेगा मुगलाई पराठा वो थोड़ा अलग है। वो होता है नॉर्मल रेगुलर पराठा बनाते हैं चॉपर वाला, उसके अंदर आपने अंडा डुब करके डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डालना डालिए, स्पेशल हो जाएगा बहुत आप तो वो डाला बंद किया, वो हो गया मुगलाई पराठा। दैट्स व्हाट यू गेट इन कैनेडा। बट द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर मुगलाई पराठा इज दैट इट हैज टू बी क्रिस्पी। उसके अंदर अंडा, कीमा, मसाले जो है सबका फ्लेवर आ रहा है। और कीमा, सिर्फ कीमा इज द ओनली थिंग जो कि आधा कच्चा पक्का है, क्योंकि जब आप फ्राई कर रहे हैं तो कीमा उसके अंदर लाइक व्हेन यू मेक पैटी बर्गर के लिए, सो यू नॉट कुकिंग द पैटी कंप्लीटली, यू नीड दैट मीडियम रेयर टाइप का गोश्त, तो वो उसके अंदर हो रहा है। एंड देन व्हेन यू टेक अ बाइट दैट जूस कम्स आउट एंड द टॉप जो है वो क्रिस्पी होना चाहिए। तो जब उन्होंने बनाया वो एक बार बनाया था बड़ी मेहनत से, बिकॉज आई हैव नेवर सीन माय नानी माँ कुकिंग एवर। मैंने उनको हमेशा रिटायर्ड ही देखा है, बट शी वॉज द मैट्रियार्क। हमारे घर की जो मैट्रियार्क थी वो नानी थी। बैठे रहेंगे जब बकरीद होता है, जब गोश्त कट के आ गया है, देन शी बी द वन जो कि गोश्त बांटेंगे लोग, नोबडी एल्स कैन टच वो परात। शी वॉज द मैट्रियार्क। वो ऑर्डर शी वॉज जो भी यहाँ पे जो भी मैनेजर है वो मतलब ऑफिस में काम करते हैं, दे वुड नो कि मैनेजर जो काम नहीं करते, काम करवाते हैं। तो मैं नानी वॉज अ मैनेजर, तुम काम करो मैं ऑर्डर दूंगी। So that's how, but that मुगलाई पराठा I absolutely love it. काफ़ी चीज़ें ना हमारे गायब इसलिए हो गई कि बहुत नुआंस्ड है, बहुत टाइम लग जाता है उन चीज़ों को बनाने में, तो हट गई। अब मैं डॉक्यूमेंट कर लिया, होपिंग कि somebody else will do it. कभी के बाद मैं साल में 3 चीज़ें बनाता हूँ मैं, जिसको मैं सालाना उर्स बोलता हूँ मेरे घर का। पहला है हलीम जो साल में एक बार बनता है सर्दी में, दूसरा बनता है रान, फुल रान, और तीसरा बनता है अंडे का हलवा। ये 3 चीज़ें सालाना उसके अंदर खाते हैं, उसके अलावा कभी नहीं बनता है। बहुत मेहनत लगता है, ओनली वन मेकिंग इट। तो सो दैट्स मुगलाई पराठा, माय नानीज मुगलाई पराठा, नॉट माय, नानी की मुगलाई पराठा है। आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई इट। मेहनत लगेगा संडे को बनाने के लिए। It's a beautiful recipe. Believe me, it comes out really well. You mentioned that both your family homes, one of them had 2 kitchens and the other one had 3 kitchens. Now that seems like a luxury in today's contemporary times. What was the purpose? What was the function? Like what happened in those kitchens? Like 2 separate kitchens, 2 kitchens and then 3. That's literally like the ground floor of any of our houses becoming just a kitchen. हाँ, अब तो एक छोटा सा कोठी है वहाँ, घर 25 फ्लोर। तो नानी घर दादी घर दोनों में, नानी घर में 2 किचन था, दादी घर में 3 था। दादी घर भी था भी बहुत बड़ा। अच्छा पहले ना ऐसे था ना, ऐसा पूरा आपका कुनबा साथ में रहता था, अब तो न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, कुनबा, पूरा गांव साथ में रहता आपके, एक्सटेंडेड फैमिली भी साथ में, तो इसलिए 3 था। 2 हमारे ही थे, एक जो है मर्दों का था, मर्दाना, मर्द लोग खाना बनाते थे, कामचोर, कभी कभार बनाएंगे तो मर्दाना है। अच्छा मर्दाना किचन दोनों जगहों पे अलग इसलिए भी था क्योंकि मर्दों को खाना बनाने आता नहीं है ना, गंदगी फैलाना ज़्यादा आता है, तो मर्दाना अलग था कि तुम भाई जितना गंदगी फैलाने तो अलग से फैलाओ,
इधर वाले में नहीं आना है, ये हमारा एरिया। इसलिए हमेशा एक किचन अलग था उनका। आई वॉज डूइंग रिसर्च ऑन पार्टीशन, तो उसमें भी कुछ लोगों ने ये बताया था कि 2 उनके घर किचन थे, लेकिन उनका किचन इसलिए नहीं था क्योंकि मर्दाना जनाना था, उनका किचन इसलिए था क्योंकि वो खुद तो गोश्त खो थे, दे वर द मीट ईटर्स, नॉट द फैमिली। हाँ, सो द फैमिली वाज वेजिटेरियन, तो वो नीचे खाते थे, जो मीट था वो बनता था छत पे, दैट वाज आल्सो मेड बाय ओनली द मेन। सो मैनली मीट जो भी बोल सकते हैं, मटन ही बनता था यूजुअली, क्योंकि मटन सपोज टू बी मैनली। तो यहाँ वही सीन था, 3 किचन का मतलब ये, एक किचन जो था वो हमारे चाचा लोगों का था, लेकिन अगेन बड़ा ही था, तो तीनों इसी तरीके से फंक्शन करता। नानी घर में ऑन द अदर हैंड भी 3 किचन था, जिसमें से एक जो हमेशा स्टोर रूम के तरीके से ही इस्तेमाल किया जाता था। एक में स्टोर रूम में ड्राई पैंट्री था, एक में होता था, अच्छा ये कोठरी नहीं है, कोठरी इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, तो वो कोठरी, ये कोठरी नहीं है, लेकिन कोठरी सामान निकल के यहाँ था। दूसरा होता था वही सिर्फ नीचे सामान बन रहा है, कभी बहुत लोग आ गए हैं तो किचन एक्सटेंड हो गया ऊपर जाके, तो वो था। तो इसलिए हमारे पास 3 किचन हुआ करते थे, खाना अमूमन खाना एक किचन से ही आया करता था। You also mentioned that you did a lot of research on Rampur cuisine. How was that? What was the discovery like? What is it that you hold closest to your heart? Because Rampur cuisine is also very delicate, very, very delicate. Again, as you said, very nuanced. So I think Rampur, I just finished working on Rampur project. For people who don't know where Rampur, because many people don't. यूपी में है, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया बिकॉज ऑफ आजम खान, पहले भी था। अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो रामपुर होके निकलना होता है। रामपुर एक रियासत थी जो सबसे आखिरी में दी अंग्रेज़ों के पास, और अंग्रेज़ों ने बोला था कि आपको एक्चुअली नहीं सरेंडर नहीं किया था। अंग्रेज़ों ने बोला कि आप नहीं करोगे तो आपकी रियासत को कभी हिस्ट्री में नाम नहीं मिलेगा, which is funny because Rampur then became a safe haven for people. जब 1857 का पहला गदर हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, तो ऐसा मेरठ के लौंडे ऐसे ही बोलते हैं, लाइक पार्टीशन किसी गलती है, अलीगढ़ के लौंडों की, गदर किसको, मेरठ के, तो मेरठ से लोग आ गए, सब जगह से आ गए थे। तो जब गदर मच गया, सिपाही म्यूजिक जब हुई पहला, जब बहादुर शाह को हटा दिया था, so now this place becomes safe haven for every artist, and when I'm saying artist I mean जो खाना बना सकते हैं, जो पेंटिंग कर सकते हैं, जो गाना गा सकते हैं। गालिब तक जाके वहाँ रहे थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन उनको पसंद नहीं आया, वापस घूम के यहाँ आ गए। वहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि अब लोग बहुत हैं, लोग मतलब आर्टिस्ट बहुत हैं, बट डिमांड इज मोर देन द सप्लाई बेसिकली, सॉरी सप्लाई इज मोर देन डिमांड। तो अगर किसी ने चावल बनाना तो वो सिर्फ चावल ही बना रहा है, नथिंग एल्स, वो एक ही किस्म के चावल को अलग अलग किस्म बनाएगा। देयर इज अ राइस व्हिच आई कैन रिकॉल, इट्स कॉल्ड मोतिया पुलाव। अब मोतिया पुलाव इज नॉट एडिंग मोती इन इट, बट ईच एंड एवरी ग्रेन ऑफ राइस हैज टू बी सिल्वर फॉइल कोटेड, और सिल्वर लीफ इसको बोलते हैं, चांदी वर्क, उसमें कोट करके फिर उसको पकाते थे। सो इमेजिन जिंदगी में टाइम कितना है। पढ़ रहा है नवाब साहब, रामपुर नवाब साहब शौकीन भी थे, ऑल द रामपुर नवाब फैमिलीज इंक्लूडिंग अभी भी जो है। फिर दूसरा नंबर, रामपुर में एक इंटरेस्टिंग सी है कहानी, वो है खिचड़ी की। कहीं भी खिचड़ी, जैसे महाराष्ट्र में खाना अक्सर जो होता है ना, कि अगर आप इंग्लिश पीपल फॉर एग्जाम्पल, अगर इंग्लिश मतलब नॉट इंग्लिश टॉकिंग पीपल बट ब्रिटिश, अगर आपको चाय मिली है तो आप अच्छे हो, चाय के साथ बिस्किट मिल गया तो आप अजीज हो, बड़े क्लोज हो। महाराष्ट्र है समथिंग कॉल्ड कांदा पोहा होना। कांदा पोहा होना मतलब आप शादी करने जाओगे और लड़का लड़की पसंद आ गया तो कांदा पोहा हो गया आपका, राइट। सेम माय नाना यूज्ड टू से दिस कि अगर घर पे कोई आया, अच्छा नाना, आई डोंट नो, आई हैव नेवर मेट माय नाना, बट दिस इज व्हाट माय नानी एंड माय मदर यूज्ड टू से, कि घर पे कोई आपका आया है और आप अगर उसको पान और पानी ना पिलाओ तो आप, वो बंदा या वो इंसान मुर्दा घर पे थोड़ी आया है। तो हमारे दरवाजे पे हमेशा पान और पानी हमेशा रखा हुआ था। तो इस तरीके से खाने को रिलेटेड है।
अब रामपुर में जो सिस्टम क्या है वो है खिचड़ी का। तो अगर आप अजीज हो तो आपको खिचड़ी की दावत मिलती है, बहुत ही सिंपल सा, बट नॉट द खिचड़ी लाइक अ राजस्थानी बिहारी खिचड़ी या फिर राजस्थानी खिचड़ी। इट्स लिटिल लंपियर देन द पुलाव। तो पुलाव का थोड़ा सा एक्स्ट्रा गीला वर्जन होता था। और दाल खिचड़ी, दाल एंड चावल, और ये अमूमन सर्व होता था विद सम काइंड ऑफ गोश्त। और बावर्ची जो थे वहाँ पर दे यूज्ड टू लर्न हाउ टू मेक गुड खिचड़ी। एंड अगर नवाब साहब को पसंद आ गया देन ही विल सेंड द शेफ्स टू यूरोप एज ए रिवॉर्ड। तो वो जाते थे, सीख के कुछ ना कुछ आते थे, तो इंटर्नशिप लगती थी उनके वहाँ पर। तो यूरोपियन फूड का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है। एक बड़ा एक मुझे जो इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंस लगता है इज अ डिश इन रामपुर कॉल्ड गुलत्थी। गुलत्थी इज अ डिस्टेंट कजन ऑफ खीर, उसमें चावल दाल सब जाता है। गुलत्थी आता वर्ड है गुल से, गुल मीन्स फ्लावर। और ये गुल जो बनता है वो बनता है कैरमलाइज्ड शुगर से। हिंदुस्तानी खाने में कैरमलाइज्ड शुगर का कहीं जिक्र नहीं है। शुगर है, हिंदुस्तान ने ही डायबिटीज दुनिया को दी है। We are the pioneer. We started making sugar, even though it's called चीनी, but we were the one who made it. मिस्री भी हमने दी है। It came back from मिस्र, इजिप्ट से वापस घूम के आ गई, that's why it's called मिस्री। दी हम नहीं है। तो अब ये जो कैरमलाइजेशन ऑफ शुगर था, कैरमलाइज करके then you put it up on top. Somehow, I'm assuming back in days, they used to carve it like flour, and that's why it's called gulatti. The idea was similar to like a caramel custard, या फिर flan जिसको बोलते हैं, कि आपके ऊपर एक अच्छा सा शुगर का कोट है, you crack it open and then अब नहीं वैसा होता है, but हाँ, that's the gulatti. So that's an interesting concept. गोश्त जो है ज़्यादा खाते हैं रामपुर के लोग। चिकन अगर खाएंगे तो मतलब तबीयत खराब है आपकी, तभी चिकन खाएं। चिकन सब्जी होती है बेसिकली वहाँ पर, सब्जी खा लो। तो ये कुछ कुछ है इंटरेस्टिंग सी चीज़ें जो सिर्फ रामपुर मिलती है। अच्छा, रामपुर का खाना इसलिए यूनिक है बिकॉज वो अवध का नहीं है, इवन दो अवध से क्लोज है। वो मुगल नहीं है, इवन दो मुगल्स गेव अ टेम्पलेट, राइट। ऐसा नहीं कि मुगल से पहले खाना नहीं खाते लोग, ऑफकोर्स तोमर डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टीज, दिल्ली से वगैरह खाना खाते थे ना। उस तरीके का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है क्योंकि लड़ाइयाँ बहुत होती थी। मुगल तक थोड़ी सी लड़ाइयाँ थोड़ी सी कम हो गई थी, तो उन्होंने बोला खाने पर ध्यान दें। तो मुगल टेम्पलेट आ गया, लेकिन अवध ने उसको डिफाइन किया। अब वही रिफाइनमेंट जब चला गया रामपुर तो वो और भी ज़्यादा डिफाइन हुआ। खुशबू पे फोकस किया गया। खड़े मसाले जो लखनऊ में उनको दबा दिया गया, यहाँ पर बिल्कुल भी बैठा दिया गया उनको, बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे। कुछ एक चीज़ों में ही होता है। एक बनती है बड़ी इंटरेस्टिंग, बनती है बिरयानी कॉल 2 गोश्ता बिरयानी और 3 गोश्त बिरयानी। 2 गोश्ता बिरयानी में होता है कीमा, गोश्त के कीमे और चॉप्स या फिर रिब्स जिसको बोलते हैं। 3 गोश्त बिरयानी में 3 गोश्त नहीं पड़ता है, 3 अलग अलग किस्म का गोश्त पड़ता है। उसके अंदर चिड़िया भी जाएगी, उसके अंदर रेड मीट भी जाएगा, उसके अंदर मछली भी जाएगी। सो लैम्ब, चिकन एंड फिश, इसको बोलते हैं 3 गोश्ता बिरयानी। तो वो नफासत थोड़ी सी एक्स्ट्रा रामपुर में चली गई, एंड दैट्स व्हाई आई एब्सोल्युटली लव रामपुरी फूड। पीपल शुड नो अबाउट रामपुरी फूड लॉट मोर। अलग से ही इश्क हो जाता है। I agree with you. Like if you try some of those recipes, they're just unbelievable. The most common one is दाल कोरमा। कभी ट्राई करें, रेसिपी है दाल कोरमा, कभी ट्राई करें। अमूमन दाल कोरमा मैयतों में बनता है रामपुर में, लेकिन ऐसे भी खा सकते हैं। खाते हैं लोग? हाँ, भी खाते हैं। So with that, I'm going to open it up for questions. I'm sure all of you have a lot. So, who's up for the first question? Just keep your questions brief and to the point. हाँ, मेरे आंसर लंबे रहेंगे। No questions? Okay, Jatin. Hey, hi. Hello. So, yeah, just wanted to know when did you sort of knew that you want to work on this book? Like there must have been something specific in life, that sort of made you feel that I need to read this book. Which work? Writing, cooking, which work? Yours. Writing. नहीं, Yeah, writing. अच्छा, writing. I told you that this was
2018 की वो शाम जब आसमान में सूरज और चांद दोनों साथ में दिख रहे थे. No, 2018 it was the year. Then I realized that you know what, एक बड़ा इशू है मेरे साथ, वो है जेलसी. बड़ा जल्दी जेलस होता है, बट इन अ वेरी गुड वे, बिकॉज मैं जेलस में क्या है, उसने तुमने ऐसा क्या कर जो मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना. So I'm like यार खाना पक्का पका दे. What is there that I am leaving behind? So that's why ये jealousy चक्कर में I let me push myself and write stories for people. क्योंकि अब तक जितने भी हैं आलिम फाजिल लोग हैं, and I respect all of them, जितने भी फूड में हैं, but मैं जवान कोई नहीं है. So मैं जवान स्टोरी टेलर बनेगा. Like I love and I always tell people कि मैं ऐसे बड़ा हो गया ना, तो बोलते हैं बड़ा हो गया पुष्पेशपन बनना चाहता हूँ. तो एक तो है कि उनकी बात करने की कैपेसिटी और मेरी सेम है, हम कंटिन्यूसली बात करते हैं. अब नहीं, थोड़ा सा और बड़ा होना है आपको. तो उस टाइम तक आते रहते हैं. हाँ, वो तो हर चीज़ बात करते हैं. हाँ, तो मैं बड़ा होकर 5 साल में आया था, थोड़ा बाल कम हो जाएगा उसके बाद. तो दैट इज माय एस्पिरेशन. So yeah, I wanted to talk about stories. So 2018 से स्टार्ट हुई जर्नी. Yes. Good evening. Good evening. That was a very interesting session. I myself am a chef. I turned chef during the lockdown, and I've seen you are an animator by education, but you turned to cooking. Like, what really inspired? We all have been intrigued by cooking. Those who love food love cooking, right? So, what actually made you turn from an animator to a chef? दो चीजें हैं. पहला ना, I like to cook. Somebody asked me this question. लॉकडाउन के टाइम पर एक इंटरव्यू चल रहा था, and said one word to describe yourself. मैंने बोला बहरूपिया. मुझे अच्छा लगता है, ये सब कर लो, ऐसा क्या है. तो both are I wanted to. And second एनिमेटर ने मैं I'm not kidding, जब मेरा सब पूरा हो गया, finish, I have this certificate in my hand, I was so bored. हो गया मेरा, करना ही नहीं है. फिर like चलो, क्योंकि पापा ने पूरा कैश पेमेंट दिया था उस टाइम पर, तो उसे था यार बहुत पैसे दे दिया, मजाक बहुत खर्चा किया. So I moved from Ranchi to Delhi, started working as a designer in a bunch of places. Then I realized that as a designer आपकी कोई इज्जत तो होती नहीं है. What you're essentially doing is, people who are a designer or who work with designer, if you work with designer, then you know what I'm talking about, and if you are a designer, then you also know. That as a designer, you know at the end of the day, आप खाली माउस ला दो, आपका क्लाइंट ही आपको बता रहा है ना क्या. मैं as a designer, I can visualize, right, कि पीला और सफेद साथ में शायद नहीं जाएगा. अब क्लाइंट को चाहिए नहीं, पीला चाहिए, सफेद चाहिए, उसमें उड़ती हुई मछली चाहिए. ठीक है, चाहिए तो आपने से बनाया और मछली डाल दी, इधर सफेद मछली हो. So then I realized it was really annoying. I'm like, करना ही थक गया था मैं. So I left it, and also I realized that you know what, second job नहीं हो पाएगा animation. So I worked on one of the popular cartoon. Then मतलब उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया, तो नहीं हुआ. छोटा भीम. तो छोटा भीम में मैं था रांची से, और एक और था सीनियर बॉम्बे से. तो वैसे छुटपुट सामान भेजे मुझे, और मैं उसको क्लीन अप करके मैं उसको कुछ भगवान बन रहा बेसिकली. मैं ब्रह्म हूँ, बिकॉज ब्रह्मा का काम हुई है ना जान फूकना. मैं भी ऐसे एनिमेट करा रहा हूँ, डेड मॉडल्स में जान डाल रहा हूँ, वो भगा रहा हूँ. तो आई गॉट बोर्ड. हम यार ऐसे बैठ के क्या जिंदगी है, क्या बैठे हुए दिन भर रात भर बैठे, कोई जिंदगी नहीं, बड़े बिल्कुल डल से जिंदगी. हमने कल नहीं आंखें धस गई थी मेरी. छोड़ दो, खाना देख के निकल आएंगे. हाँ, जिसमें भी आंखों में चमक आ जाए ना, वही चाहिए. So that's when I left animation. but नहीं हो पाया. But people who animate, please आप continue करना. Did you know Arnab Chaudhary? No. One who did the Mahabharata and animation. नहीं, I was very bad animator. तभी छोड़ दिया. छोटा सा नहीं मिला इसका. Do we have any more? बड़ी मेहनत से मैंने गुलाब बनाया था, उसमें ए मिला था मुझे जिंदगी में. 1 घंटे लगा मैंने गुलाब बनाया था, अडल्ट होके 19 साल की उम्र में. तो सबसे अच्छी चीज क्या लगती है सिर्फ किसमें? खाने में. खाने में, खाना बनाने में. खाने में कबाब से बेहतर कुछ बनाई नहीं जिंदगी में. I also make kebab, but हाँ, yes sir. You mentioned about तीन मीट की बिरयानी. हाँ. Mutton takes about an hour, chicken takes only half an hour, हाँ. fish takes only 15 minutes to cook.
So can you share some of your secrets, you यही know, तो बात है। without destroying the other meats? How do you हाँ। achieve that? I mean, I've never heard of this. First time today I heard about this. यही 3 मीट की बिरयानी. हैदराबाद में ना एक बिरयानी है। बिरयानी अमूमन 2 किस्म की बनती है फॉर पीपल हु मेक बिरयानी। एक हाँ मटन और चिकन। नहीं वो तो बिल्कुल वो तो इंग्रेडिएंट से बनती है ना। कोरमा बिरयानी जिसमें आप चिकन मटन का कोरमा लाते हो और कच्चे गोश्त। कच्चा गोश्त तो हैदराबाद डेलिकेसी बहुत पसंद बनती है। जब मैंने सबसे पहले बनाया मैं कभी क्या बन गए बिकॉज मटन टेक्स अ लॉट मोर टाइम देन चावल और चावल और मटन सब साथ में कैसे बन गया तो देन इसलिए वो साल में 2-3 बार बनता है वो बिकॉज बहुत मेहनत है और मतलब मेहनत है और प्लस अप्रिसिएशन जहाँ कम मिला ना उसको थोड़ा कम होना चाहिए इसलिए हाल ही में बनता है साल में कि साल में 10 साल अप्रिसिएशन। तो ये जो मटन है उसको वैसे कहते हैं आप मटन को प्रॉपरली मैरिनेट करते हैं और उसके बाद उसको फिर जब मैरिनेट हो गया तब वो दम लगता है। 2 तरीके की रेसिपी थी। एक था जहाँ आपने पूरा मटन को ही दम लगा दिया है राइट। सेकंड इज यू चॉप देम एंड देन यू मतलब कुचल करके छोटे छोटे चंक्स डाले आपने तो वही मैरिनेटेड रहेगा। तो आपने पहले जब भी मटन की बिरयानी बनती है स्पेशली कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है तो आप नीचे के लेयर में जो है गोश्त ही लगाते हैं ताकि वो डायरेक्ट हीट पे जाए। उसके बाद चावल फिर आता है चिकन फिर चावल फिर आता है फिश राइट। ये 3 लेयर बन गया उससे हो गई 3 गोश्त बिरयानी। तो ये वैसे थी 3 गोश्त बिरयानी। बड़ी मेहनत का काम है लेकिन आप अगर कोठी में बंगले रहते हैं तभी ट्राई करिएगा तो लकड़ी से बना रहा है गैस पे तो भाई वो ये मैं कह रही थी गैस पे नहीं वो you can't control the flame like that तो you can't and आप लकड़ी के साथ you can हाँ लकड़ी से you can। मेरा लास्ट एक चीज मुझे पूछना है आपका दस्तरखान कब बिछवाएंगे आप हम लोगों के लिए जब आप पकाएंगे अगली बारी मीता ने बोला अगली बार होगा। चल रहा है आइडिया दिमाग में कुछ करेंगे बट फिलहाल तो हमारा जीवन उनका दस्तरखान करेक्ट। फिलहाल तो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट क्योंकि खाने पीने में बात चल रही है और हम आईटीसी राजपुताना में हैं तो ऋषि जनरल मैनेजर फॉर आईटीसी राजपुताना आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू कम अप एंड से अ फ्यू वर्ड्स and then also give the memento to Sadaf. Very interesting press release and all. I'm definitely going to take a copy of the book over there and try something. Thank you so much everyone. Wishing everybody a lovely year ahead and I think this year comes with a lot of energies, a lot of renewed vows for all of us and all the best to all of us. Thank you. मैं तो पागल को बोल रहा हूँ कब ट्राई करा I'm asking chef पागल प्लीज ट्राई करिए। मैं भी उनके पीछे पड़ा हूँ दुम्बा बनाने के लिए। अब कल आज कल पकड़ लेंगे साथ में। कल पकड़ तो सुबह 10:30 मैं पकड़ रहा हूँ आप पहले पकड़ लेंगे मेरे ख्याल से। Can we also Rishi please present the memento. ये सब पहन कर Thank you so much, Rishi. With that, we'll come to an end. Thank you so much for listening so patiently. You know how it works. Every family, just pick up your copy of the book and get it signed. Sadaf, you have to sign it. अच्छा एक चीज तो भूल गई वो क्यों लगाया? Have you seen this? Yes, so cute. I generally believe ऐसे बड़ा बोलिंग से इंसान मुझे लगता है ये ना this guy is called मालधारी मतलब मैंने इसका नाम नहीं दिया है इसका नाम ही है comes from a shepherd community राजस्थान में भी पाए जाते हैं ये लोग एमपी में पाए जाते हैं और shepherd community के जो they move with the ingredients as well they move with the ingredients and कहानी अब क्योंकि ऐसे भेड़ बाकी थोड़ी बात करेंगे तो गाना गाते रहते हैं या फिर आसपास 2-3 लोग होते हैं तो किससे कहानी चलता रहता है। तो when I saw this was 3-4 years back and लगा ये तो मैं ही हूँ तो मैंने खरीद लिया। एक आर्टिस्ट है दिल्ली में तो वो ये बनाती है और मुझे बड़ा पसंद आया था तो मैंने फिर से मंगा लिया। तो अभी जो उसने भेजा है वो उसमें झुमरू लगाया हुआ है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये मैंने एज एन आइस ब्रेकर ही लगाता हूँ कि लोग को लगता है ये क्या है फिर हम बातचीत करते हैं। ये चलता फिरता टिंडर है बेसिकली।
टिंडर बम्बल है, इसको लाइफ लेफ्ट राइट साइड करते हैं हम लोग। तो ये घर मेरा पे कोई है क्या जो मारेगा ये बोलने के बाद? नहीं, कोई नहीं। Putting it out there. नहीं, जिंदगी है अच्छी चल रही है। Excuse me. मतलब जनरली अच्छी चल रही है। What happens to all the married people out here? ये भी अच्छी चल रही है? सबकी अच्छी तो है। subjective चीज़ है। अपने अपने आप अच्छे हैं। Well, thank you so much, Sadaf. It's been Thank you so much. such a pleasure. Can we have a round of applause for Sadaf? Thank you for being with us. Thank you so much. It's This is absolutely not my pleasure. the only time that you're going to come back and be with us. We're going to plan a few things. Done deal. Thank you. Thank you. Yes.